So I think we discussed the flexure capacity calculations corresponding to stage 1 and stage 2. In the previous class, we discussed how to calculate the flexure capacity of a reinforced concrete section corresponding to stage 1 and stage 2. इस तरह है ना? स्टेज 3 के लिए हमने कैलकुलेशन की है? No, sir. No, sir. Okay, so today we will discuss how to calculate the flexure capacity of a reinforced concrete section corresponding to stage 3. Which is basically the ultimate stage or the failure stage. Now, for example, there is a reinforced concrete section. Now there is a reinforced concrete section. The strain diagram at ultimate stage will look like this. You know this value, it is 0.003. The strain in the extreme compression fiber will be 0.003 because this is the crushing strain. This we discussed in the previous class. This is the neutral axis depth, C, small c. Now, since we know that at this stage, this is the failure stage, so at this stage, the stress-strain relation will not be linear, and the stress variation we can see it will be somewhat like this. It will vary like this. Okay. जिस तरह मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट आप लोगों ने हमने डिस्कस किया था in lecture 1, if you remember. This is the stress strain curve of material stress strain curve of concrete, and we discussed this that the crushing strain or the ultimate strain value is 0.003. Similarly, the strain corresponding to maximum stress or strength of concrete is 0.002. You remember this? So similarly, here you can see that somewhere here the strain value will be 0.002, and you can see corresponding to this strain the stress will be maximum. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. So at this stage, since the stress is not varying
the stresses and strains are not proportional, you cannot directly calculate the stress values from the strain using Hooke's law. Clear? Because it is valid only up to 0.45 fc prime. Like for example, up to this point corresponds to fc prime, and up to 0.45 fc prime the stresses will be proportional to strains, and you can calculate the stress values in concrete directly from the strain values using Hooke's law. That is, multiply strain with the elastic modulus to get the stress value. Clear? However, after this, the stresses will not be proportional to strains, you can see here, and you cannot directly calculate stresses from the strains. Also, you know the value of stress in the reinforcing bar, it will be equal to Fy. Why? Because you have seen in the video that for a beam which is designed as per ACI 318-19, the steel would have yielded well before the crushing of concrete. This you have observed in the video. So at this stage, since this steel would have already yielded, so we can take the stress value in the steel equal to Fy. So it means at this stage, at the ultimate stage, the strain in the extreme compression fiber is known to you, which is 0.003, and the stress in the steel, in the tensile steel, is also known to you, which is Fy. So compressive strain in the extreme compression fiber of concrete is known to you, which is 0.003, and the stress value in the tensile steel is also known to you. Clear? Now you can very easily calculate the value of tensile force from the relation T is equal to area of steel multiplied by stress in steel, which is Fy. But now how to calculate the compressive force? What will be the value of compressive force? Anyone? Stress multiplied by area. हाँ, तो स्ट्रेस किस तरह कैलकुलेट करेंगे? Because the stress is now varying non-linearly. Stresses किस तरह Compression is calculate equal to tension, sir. Area under curve से सर. हाँ, एरिया अंडर द कर्व. तो एरिया अंडर द कर्व किस तरह कैलकुलेट करेंगे? पैराबोलिक सर वो जो इक्वेशन है. Yes, you have to develop first of all an equation for the stress strain curve. इस कर्व के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन डेवलप करनी है, and then you have to integrate that equation over this area on which the stress is acting. This is the area on which the compressive stresses are acting. So from this you can calculate the value of compression force.
Usually the relation used, the equation used for this curve is equal to fc prime to e divided by e naught minus e naught square. This is the simple equation proposed by Hognestad, in which e naught is 0.002 and e is the strain value at any e is any strain value. So from this, if you put the value of strain, if you put any value of strain here, you can calculate the value of stress corresponding to that strain value. Clear? So first of all, you have to develop an equation, then you have to integrate this equation over the area on which these stresses are acting. So you can calculate from this the value of C. Now, then where this C will be resisted? So definitely you know that the compressive forces will be resisted at the centroid of this area. So in order to find the centroid of this area, you will use some other mathematical equations. So practically, from design point of view, it becomes very difficult. इस तरह है कि नहीं? ओके यहाँ तक क्लियर है? सर ये जो इक्वेशन आपने सर बताई ये एफ सी को फाइंड करने के लिए, यहाँ पर तो जो कर्व है इसमें हमारे पास जो स्ट्रेन है अलोंग द लेंथ ऑफ कर्व ये वैल्यू चेंज होती है, तो इसमें हम फिर कौन सी एफ सी की वैल्यू मतलब पुट करेंगे? कहाँ पर? सर जो पैराबोलिक पाथ जिस तरह है जो कर्व है, यहाँ पर हम हाँ अलोंग द अगर इस तरह कर्व जाए तो हमारे पास जो ई की वैल्यू है वो मतलब चेंज होती है, एक जगह पर मतलब कम होगी, एक जगह पर ज़्यादा होगी। तो अगर हम उस इक्वेशन में पुट करें फॉर डिफरेंट ई है तो हमारे पास डिफरेंट एफ सी की वैल्यू आएगी सर। तो फिर हम इसमें कौन से एफ सी को कंसिडर करेंगे? तो डिफरेंट एफ सी आएगी ना यार, हर एक स्ट्रेन के लिए अपनी एफ सी वैल्यू होगी ना। फॉर एग्जाम्पल आप जरा पुट करें इसमें 0.002, ये अब मैं आपको बता देता हूँ, ये दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, मगर बहरहाल आप ये जो 0.002 ये जरा इसमें पुट करें इंस्टेड ऑफ ई, तो इट विल बी इक्वल टू एफ सी प्राइम इनटू E divided by E naught will be equal to it will be equal to 1 because E naught is also 0.002 and you have also put the value of E is equal to 0.002. This will be equal to 2 and minus E by E naught, again it is 1. So FC is equal to what? FC prime. आप यहाँ पर देख सकते हैं
8.002 strain value if C is equal to FC prime. इस तरह है कि नहीं? And for equation you also get the same value. ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो इसी तरीके से हर एक स्ट्रेन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें 0.003 पुट करें तो योर वैल्यू corresponding to 0.003 will be equal to 0.85 C prime. At 0.003 the stress value will be 0.85 FC prime. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सर क्लियर है सर। So this stress corresponding to 0.003 here, it is basically 0.85 FC prime. अच्छा, so we were discussing that practically it becomes very difficult from design point of view to develop an equation for this curve. Then we have to integrate this over the area to get the value of C. Then using some other mathematical equations, you can calculate the centroid of this area. So it becomes very difficult. So what we can do, we can replace this stress diagram, actual stress diagram, with an equivalent stress block, which is called equivalent rectangular stress block. This is an equivalent rectangular stress block which is proposed by Whitney. So it is also called Whitney stress block. And you can see that the stresses acting on this block, it is uniform. The value is 0.85 FC prime. And the depth of the compression block is denoted by A. And you can see that A is less than C. इस तरह है ना? A will be less than C, that is the neutral axis depth. So depth of the compression block will be less than the neutral axis depth. अच्छा, ये किसके बराबर होगा? So code says that A will be equal to beta 1 C. Clear? And beta 1 will be equal to 0.85 for FC prime less than or equal to 4000 psi. Since in case of reinforced concrete beams, normally 3000 psi strength is used. Maximum up to 4000 psi concrete strength is used in case of reinforced concrete beam. So always beta 1 in case of beam will be 0.85. Okay. Then for each 1000 increment above this value, like for example for 5000 psi, the beta 1 will be reduced by 0.05. Like for example for 5000 psi, the value will be 0.8. For 6000 psi, the beta 1 value will be 0.75. And then there is a minimum limit on this, that beta 1 cannot be less than 0.65. However, for beam, beta 1 will be equal to 0.85. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ये क्लियर है? Now that जी we have replaced the actual stress distribution with a rectangular stress block, so now the calculations become very simple. अब जरा मुझे बताएं C की वैल्यू क्या होगी? What will be the compressive force? .85 multiplied by
A multiplied by C prime. Yes, the stress is, since the stress is uniform, so it will be equal to stress 0.85 Fc prime multiplied by area on which this stress is acting, so it is B into A. Clear? अब आप देखें calculations become very simple and you can very easily calculate the centroid on which this force will be resisted, centroid of the rectangular stress block. कहाँ पर ये resist होगा? A divided by 2. A divided by 2. Simple है ना? So this distance will be equal to A by 2. बात समझ में आ रही है? Now from this you can also calculate this distance, lever arm. Lever arm किसके बराबर होगा? Effective depth minus A by 2. Anyone D else? minus A by 2. D minus A by 2. So now the calculation becomes very simple. You know the value of tensile force. You can also calculate the value of compression force. So using equilibrium equation, from equilibrium you know that C will be equal to T. T is equal to 0.85 Fc prime into BA. T is equal to ASFY. So from this you can also develop a relation for compression block depth, which will be equal to ASFY divided by 0.85 Fc prime B. Clear? So for a given beam with given reinforcement, you can calculate the depth of compression block using this relation. You can compare this with the relation of neutral axis depth for stage 2. It was equal to ASFY divided by 0.45 Fc prime B, if you remember. Okay. Similarly, the resisting moment capacity will be equal to T multiplied by LA, lever arm. T is equal to ASFY, and lever arm we just calculated. It is T minus A by 2. So this is the relation for moment capacity, flexure capacity of a reinforced concrete section at stage 3. इसको अगर आप कंपेयर करें, the flexure capacity corresponding to stage 2, so the relation for that was ASFY it was 0.5 ASFY into D minus C by 3. Do you remember this? Yes, sir. So now that we can calculate the flexure capacity of a reinforced concrete section at stage 1, 2, and 3. At any stage, we can calculate the flexure capacity of a reinforced concrete section. अब हम इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे, तो it will become clear to you.
if there is a reinforced concrete section, width of the section is 12 inch and the total depth is 18 inches. The reinforcement provided in the beam, this is 3 number 6 bar. So A is equal to 3 number 6. From this we can calculate the area, which is 3 multiplied by area of number 6 bar, which is 0.44. So it will be equal to 1.32 inch square. If C prime is 3 ksi and Fy is 60 ksi. These are the specified material strengths. Now for clarity, since we are interested only in the flexure reinforcement, so we didn't show the stirrups in the beam. Also there will be 2 bars in the top to hold those stirrups, but we are not showing those for clarity. Clear? And die of stirrup is number 3. Number 3 bar. So the die of stirrup is equal to 3 by 8 inch. ये क्लियर है ना? जी सर। अच्छा, ये डी किस तरह कैलकुलेट करेंगे? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. Effective depth. How to calculate this effective depth? At minus 1.5 minus y of the stirrup and longitudinal length divided by 4. roughly आप 2.5 इंच. रफली आप तो ले सकते h minus 2.5 for design, but since this is a given reinforced concrete section, everything is known to you. Die of longitudinal bar, die of strip is known to you. So for this you can calculate the actual value of effective depth, and that is very simple. मैंने आपको बताया था. You have to calculate this. For example, DC. DC किसके बराबर होगा? 1.5 plus TS plus DL by 2. D will be equal to 1.5 plus DS plus DL by 2. तो ये जरा पुट करें शाबाश. 1.5 plus 3 by 8 and plus die of longitudinal bar is 3 by 4. 102 into 3 by 4. 2.25. 2.25. 2.25 inches. तो यहाँ पर ये पुट करें. D will be equal to H minus 2.25. So H is 18 inch minus 2.25. ये वैल्यू कितनी आएगी? $15.75. It is equal to 15.75 inches. So effective depth is also known to you. It is 15.75 inches. So all the geometric and material properties of this section is now known to you. Now we can calculate the flexure capacity of this section at any stage. First of all, we will calculate the capacity of this section corresponding to stage 1. Okay? Ignoring the effect of reinforcement. So if we ignore the effect of reinforcement, which is very small contribution,
So the flexure capacity, if you remember, it was equal to Fr into B square by 6. It is equal to 7.5 Fc prime into B square divided by 6. Clear? The values are इसमें put करें and give me the value of MR. Fc prime is 3000, B is 12 inch, H is 18 inch. Put the values here in the equation and give me the value of moment capacity in inch kips. शाबाश हरियत. Two 66.19 kip. So it is equal to 266.2 inch kips. Yeah, but direct आप 266 inch kip करोगे, सही? This is the flexure capacity of the section corresponding to stage 1, ignoring the contribution of steel. Which means that this will be the capacity of the section if we don't allow cracks in the beam. क्योंकि आप देखें ना, this relation has been developed for the stage which is just at the verge of cracking, tensile cracking. So this is basically the capacity of the section at the verge of the cracking, which means that this will be the capacity of the reinforced concrete section if we don't allow cracks in the beam. Clear? Now the capacity of the section at stage 2. So for this, first of all, you have to calculate the value of C, which was equal to ASFY divided by 0.45 FC prime B. First of all, आप ये जरा मुझे बताएं, C will be less than H by 2 or it will be greater than H by 2? Less than. It will be definitely less than H by 2 because now at this stage you will be cracking in the bottom and the neutral axis depth will shift toward the top. So it will be less than H by 2. So qualitatively you know that C will be less than H by 2. This is what is called qualitative mechanics. But quantitatively you have to calculate this C from this relation. So you know all these values. AS is 1.32, FY is 60, divided by 0.45 multiplied by 3, and B is 12 inches. So give me the value. Quickly, Shabash. 4.88. 4.88 inches. Now the resisting moment capacity will be equal to 0.5 ASFY into D minus C by 3. So all these parameters are known to you. 0.5 multiplied by AS is 1.32, multiplied by FY is 60, D is basically 15.75 minus C by 3, so 4.88 divided by 3. So now what is the value of
resisting moment capacity. Quickly, Shawaj. $559.2. So 559 inch kips is the capacity of the reinforced concrete section corresponding to stage 2. You can see that this value is greater than the capacity corresponding to stage 1. Okay, and this is quite logical because at that stage you are not allowing even the cracks in the beam. And in this case, basically you are utilizing half the material strength. Clear? If you remember, इस स्टेज के लिए जब हम रिलेशन डेवलप कर रहे थे तो we assume that the stress in extreme compression fiber is 0.45 C prime and stress in steel is 0.5 Fy. So you can see that these are almost half the material strengths, half the concrete strength and half the steel strength. But in case of stage 3, at stage 3 we are utilizing the full material strengths. So in that case, even the capacity will be more than this. Clear? So coming to stage 3, ये पॉइंट समझ गए आप लोग? नो सर। इसमें क्या मसला है? आपने वीडियो नहीं देखी? नहीं सर, उस लेक्चर की समझ आई। Deformation curve. This was corresponding to stage 1. तो उसमें cracks आ रहे थे और almost at this stage, this is basically corresponding to stage 2, and then there was yielding and then there was ultimate. तो आप देखें capacity corresponding to ultimate is greater than stage 2 and the stage 2 capacity is greater than stage 1. ये तो simple है. अब बात समझ में आ रही कि नहीं? जी सर, समझ गया। अच्छा, स्टेज 3 के लिए आप first of all you will calculate the value of A, which is equal to A is Fy divided by 0.85 Fc prime B. So you know all these values. 1.32 multiplied by 60 divided by 0.85 3 by 12. What is the depth of the compression block? 2.588. 588. 2.58 inches is the value. And now using this equation you can calculate the moment capacity. So put all these values. 1.32 multiplied by 60 into D minus A by 2. What is the value of flexure capacity? 1144.91. 1144 inch kick. You can see this is the maximum capacity of the beam. This is the capacity of the beam just prior to the failure. Clear? So definitely it will be greater than the capacity corresponding to stage 2, which is 559, and that will be greater than the capacity corresponding to stage 1.
So this is how you can calculate the flexure capacity of a reinforced concrete section at different stages, stage 1, 2 and 3. अच्छा, ये तो आप कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आप एन एग्जिस्टिंग बीम, यानी आपके पास एक बीम है जिसकी साइज भी नोन है और reinforcement in the beam is also given to you. मगर डिजाइन में हम क्या करते हैं, in the design we don't know the reinforcement. The size will be assumed, size of the beam, for example 12 by 18 inch, it will be assumed, and then for the given demand we will calculate the design reinforcement. This is what is called reinforced concrete design. बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो reinforcement है ये तो आप कैलकुलेट करेंगे ना. पॉइंट समझ गए? Yes, sir. You will calculate the reinforcement for the given demand, or you will calculate the size for the given demand. For example, corresponding to stage 1. Corresponding to stage 1, there is no reinforcement contribution, so we can design the beam as a plain concrete beam in which there will be no reinforcement and in which we will not allow the cracks. तो उस केस में आप साइज भी इवन कैलकुलेट कर सकते हैं, या साइज तो आपने एज्यूम की होगी. फॉर एग्जांपल corresponding to stage 2 and stage 3, you will assume the size of the beam, and then for that size and for the given demand you can calculate the design reinforcement, the value of A's. उसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे. अब हम एक डिजाइन एग्जांपल इस पर करेंगे तो आपको मजीद ये चीज क्लियर हो जाएगी. For example, there is a simply supported beam which is subjected to uniformly distributed loading. The dead load on beam is 1.5 hip per foot, and the live load acting on the beam is 0.5 hip per foot. So the total load acting on the beam is equal to 2 kip per foot. इस तरह है. The length of the beam is, for example, 20 feet. And we assume that this dead load also includes its self weight. समझ में आ रही है? क्योंकि self weight is also a dead load. You should add the self weight with the dead load. मगर हम assume कर रहे हैं कि इस dead load में already इसकी self weight जो है included है. If we say that the self weight is excluded, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे कि सेल्फ वेट को कैलकुलेट करके उसमें आप ऐड कर सकते हैं. सही. इस केस में हम एज्यूम करते हैं that the self weight of the beam is included in the given values. Clear? Now, if you want to design this beam corresponding to stage 1, that is, which means that
if we ignore the effect of steel, or if we want to design the beam as a plain concrete beam without reinforcement. And we don't allow cracks in that beam, because in a plain concrete beam, if there is no reinforcement in the beam, what will happen? After the crack, soon after the crack will propagate toward the top, and the beam will abruptly broken into two pieces. There will be a brittle failure. That is why, if you want to design the beam as a plain concrete beam, so then we will not allow the crack in the beam. Clear? So, which means that we will design the beam corresponding to stage 1. Clear? Now you know that the resisting moment capacity corresponding to stage 1 design the beam corresponding to stage 1. So you know that MR is equal to 7.5 under root of C prime PH squared divided by 6. Okay, the material properties are C prime 3 ksi and Fy is equal to 60 ksi. These are the specified material strengths. Now, you know that the capacity shall be greater than or equal to the demand moment. So for design purpose, if we take capacity equal to demand, you can replace this MR with the MD, and it will be equal to 7.5 under root of C prime V square by 6. Now, can you calculate the demand moment? Demand moment for the given beam किस तरह calculate करेंगे? Bending moment diagrams. हाँ, तो वैल्यू मैक्सिमम कोई बता सकता है? WL square by 12. तो बिल्कुल सिंपल है यार. Simply supported beam N/4. आप लोगों ने एनालिसिस की कोर्स पढ़ी है? W square by 8, so W in this case is 2 multiplied by L square, which is 20 square divided by 8. ये जरा बताएं. 100 foot kick, and if we convert this into inch kick, to multiply this by 12, so it will be equal to 1200 inch kick. Clear? तो यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करें जरा 1200 inch kicks. Now assume that the width of beam is 12 inch and the depth will be calculated from this equation. 7.5 under root of C prime, which is 3000 multiplied by 12 multiplied by h square divided by 6, and divide by 1000 because this will be in psi, because the FC prime is in the square root. What will be the value of h?
quickly, Shabash. What is the value of h? $38.2. So h is almost equal to 40 inches. 38 point something है तो हम 40 इंच ले सकते हैं. सही. So what does it mean? It means that if you don't want to provide reinforcement in the beam, in other words, if you want to design the beam for stage 1, so then you need at least 40-inch depth of the beam for the given demand. To resist the given demand, you need at least 40-inch deep beam. So this may not be practically feasible. Clear? 40-inch, almost 4 feet depth of beam is required. ये प्रोवाइड कर सकते हैं? नो सर. क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? सर एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगेगा. हाँ? सर एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगेगा. बाकी आर्किटेक्चर है जो हमें मतलब डिप वगैरह दी गई होगी उसके मुताबिक नहीं होगा और जगह भी ज़्यादा घेरेगा. हाँ, ये प्रोवाइड तो हम कर सकते हैं, मगर नॉर्मली हम इसको प्रोवाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मली हाइट तो 10 और 11 फीट होता है. उसमें अगर आप 4 फीट ही निकालें तो द हेडरूम, available headroom will be very small. So it will basically affect the functionality of the building. The building will not be serviceable. So if you want to design the beam as a plain concrete beam, so then you have to design it corresponding to stage 1, and to resist the given demand corresponding to stage 1, you need at least 40-inch deep beam, which may not be practically feasible. So that is why we design the beam as a reinforced concrete beam. And what we are doing, we will basically assume a feasible size of the beam. For example, B is equal to 12 inch and H is equal to 18 inch. इस तरह कर सकते हैं ना? H to 18 inch ले सकते हैं ना? जी सर ले सकते हैं. 12 भी ले सकते हैं. So if we take B is equal to 12 inch and H is equal to 18 inch, so for that size we will calculate the reinforcement in the beam. And how to calculate that reinforcement? That reinforcement can be calculated corresponding to stage 2, or you can also calculate the reinforcement corresponding to stage 3. In this course, we will design the beam corresponding to stage 3. However, just for understanding purpose, for this example, we will also calculate the design reinforcement in the beam corresponding to stage 2. Clear? तो हम क्या करते हैं? First of all, we will assume the beam size, and we assume that the size of the beam is 12 by 18 inches. 12 inch is the width and 18 inch is the depth of the beam. अच्छा, ये डेप्थ हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? यानी assume करते हैं. This we can calculate. We can pick the value of minimum depth from ACI tables. वहाँ पर
हम उसको डिस्कस करेंगे, मगर इतना आपको बस इस स्टेज पर पता होना चाहिए कि वी विल एज्यूम द साइज ऑफ द बीम। क्लियर? जी, कोई क्वेश्चन कर रहा था? सर जी जी। यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड केस में स्टेज 1 में ये कितना मैक्सिमम लोड इंडोर करेगा, बर्दाश्त करेगा ये बीम? तो तुम्हें हमने किया ना, 1200 इंच के बर्दाश्त करेगा ना, उसी के लिए तो हमने डिजाइन किया ना यार। कितना डिमांड मोमेंट है? मैक्सिमम डिमांड मोमेंट इज 1200 इंच के। सिंपली सपोर्ट बीम के लिए आप लोगों ने नहीं पढ़ा ये कि this is the moment diagram and the maximum value is WL square by 8। समझ में आ रही बात? ओके सर। अच्छा, so this is called the reinforced concrete design. What you are doing in reinforced concrete design, you are assuming a feasible size of the beam, and then in that beam you can calculate the reinforcement for the given demand. Clear? क्योंकि आप देखिए, if you don't want to provide reinforcement, then you have to provide at least 40-inch deep beam. But if you reduce the depth of beam, then definitely to enhance the capacity of the beam, you have to provide reinforcement. इस तरह है ना, तो quite logical है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें reinforcement अगर हम कैलकुलेट करते हैं corresponding to stage 2, तो उसके लिए हमारे पास you know that the depth of neutral axis will be equal to AS Fy divided by 0.45 FC prime B। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। And now you know that the demand must be greater than, sorry, the demand must be less than or equal to the capacity। अच्छा, इस केस में we can take demand equal to the capacity। Why? Because we have already incorporated the factor of safety in the capacity calculations। बात समझ में आ रही है? ये कैपेसिटी जब हम कैलकुलेट करते थे, अगर आपको याद हो, तो we assume that there will be stresses and the extreme compression fiber is 0.45 C prime and stress in the steel is 0.5 Fy। तो इसका इन अदर वर्ड क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने Fc प्राइम को 2 पर डिवाइड किया और Fy को भी आपने 2 पर डिवाइड किया है। सही? This is basically working stress approach। The design corresponding to stage 2 is basically the working stress approach। The design as per the working stress approach। आप लोगों को याद है, in lecture 1 we discussed the two design approaches। One is called working stress approach, in which we incorporate the factor of safety by reducing the capacity। और कैपेसिटी को हम किस तरह रिड्यूस करते हैं? मटेरियल स्ट्रेंथ को 2 पर डिवाइड करें। अब बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. And the strength design approach, the stage 3 is basically corresponding to strength design approach। और strength design approach में आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था कि the demand is amplified and the capacities are reduced। Clear? And both will be based on scientific rationale। So since we have already provided factor of safety in developing the equation for flexure capacity corresponding to stage 2, so that is why we can take
the MD equal to MR. And you know that MR is equal to 0.5 ASFY into D minus C by 3. Clear? So now from this you can write this like MD is equal to 0.5 ASFY into D minus C by 3. And from this you can develop the relation for AS. Design reinforcement AS will be equal to MD to MD because divided by 0.5 into Fy into D minus C by 3. अच्छा अब इसको देखें जरा. This is equation 1 and this is equation 2. In equation you can see all the parameters are known to you. Fy is known to you, Fc prime, B. But what about As? तो एस को तो As आपको मालूम है? उसको तो फाइंड करना. हाँ, इसको तो कैलकुलेट करना है ना. जी सर. And where from we can calculate the As you can calculate from this equation, equation 2. अच्छा equation 2 में आप जरा देखें, MD is known to you, Fy is known to you, D you can assume very easily D is equal to H minus 2.5. But what about C? सर इक्वेशन नंबर 1 की पुट कर लो. मगर इक्वेशन 1 में तो एस नहीं है. सर तो दोनों इधर इक्वेशन 1 को सर इक्वेशन 2 में पुट कर लो तो दोनों साइड में एस हो जाएगा, सी खत्म हो जाएगी. हाँ, या तो आप इस तरह करें या आप इक्वेशन 1 को इसमें पुट करें and you can develop an equation in term of As. Clear? या मैथमेटिकली आप इस तरह भी कर सकते हैं. Such problems can be solved using the trial and adjustment method. आप क्या करें? First of all, you will assume a value of C and you will put that value of C in equation 2. For that you will calculate the value of As. You will put this value of As in equation 1 and you will recalculate the value of C. Then again you will put the new value of C in equation 2 and you will recalculate the value of As. और इसी तरह आप ट्रायल करेंगे and for the 2 consecutive trials if you get the same value of As then you will stop the trials and that will be your design reinforcement for the given demand. Clear? तो यहाँ पर जरा ये दोनों इक्वेशंस लिखें. C is equal to AS Fy divided by .45 Fc prime B and As is equal to 2 MD divided by Fy into D minus C divided by 3. So in the start you can assume C for example C is equal to 0.45 T. First of all you will assume the value of C. ये जरा मुझे बताए, जो भी आप assume करें value, finally you will get the same answer because for the given demand you will have a value, a definite value of C. तो C की वैल्यू जरा बताएं. 0.45 D अगर हम ले लें तो कितना आएगा? 1.97. अच्छा चले 6.9. 8 इंचेस देते हैं.
6.9, तो चले C is equal to 8 inch. So put this value of C, sorry, in this equation and give me the value of AS. मगर quickly आप करें, शाबाश. MD is equal to 1200, FY is 60, D is 15.5 and C is 8. So what will be the value of AS? जरा quickly calculate करें, शाबाश. Two point six. 2 point 6. 2.6 करें, शाबाश. बाकी 2.6. 2.6 inch. अच्छा, 2.6 inch square. Now put this value 2.6 inch square in this equation and recalculate the value of C. So 2.6 multiplied by 60 divided by 0.45 multiplied by 3 multiplied by 12. 9.6. 9.6 inches. Again put this value in this equation and recalculate the value of AS. जल्दी करें, शाबाश. 2.7. 2.7 inch square. Again put this value in this equation and recalculate the value of C. Ten. It is 10 inches. दोबारा जरा AS calculate करें, शाबाश. और the new value of C. Quickly, शाबाश. 2.72. 2.7. G. 2.7 के बाद क्या है? 2. 2. Recalculate the value of C. इसको यहाँ पर पुट करें. Ten. 10 point something आएगा. Exact. 10 point. सर ये ऊपर वाली वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग थी, तो इन दोनों से सेम आंसर्स आ रहे हैं. नहीं, 2.7 है ना, और फिर उसके बाद 2.72 ये वैल्यू आपने बताई ना. सर ये एग्जैक्ट 2.7 ये किसी और ने बताई थी, इसकी भी 7 के बाद और डिजिट्स थे, तो ये दोनों सेम वैल्यूज दे रही है. खैर है, कोई बात नहीं है. ये वैल्यू अब जरा बताइए 2.72 के लिए. इट इज 10 इंचेस. अगर 10 इंचेस है तो भी बताएं. 10.07. 10.07. अगेन अगर आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे, आप जरा पुट करें और मुझे वैल्यू बताएं, तो इट विल बी इक्वल टू 2.72. जरा खैर कंफर्म करें. 2.72 वैल्यू आ रही है.
Yes, sir. So 2.7. So as I told you that if you give the same value of A's for the two consecutive trials, then stop the trials, and this will be the design reinforcement. This is basically the value of A's 2.72 for the given demand. For the given beam size subjected to the given demand, the design reinforcement required in the beam is 2.72 inch square. अब बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Now what you can do from this area, A is equal to 2.72 inch square, you can calculate the number of bars. How many number of bars should be provided in the beam? So for example, if we are using number 8 bar, so how to calculate the number of bars? कोई बता सकता है? Total area divided by area upon bar. Total area, which is 2.72, divided by area bar, which is 0.79. So how many bars are required? ये जरा डिवाइड करें, क्या वैल्यू आ रही है? .4 3.4. तो 3.4 तो हम नहीं देते, तो 4 number 8 bars will be provided in the beam. Clear? सर ये जो ज्यादा प्रोवाइड करते हैं ये इस ये कोड के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास फिर ब्रिटल फेलियर होगी सर। नहीं, उसके खिलाफ नहीं है, ब्रिटल फेलियर नहीं होगी। ब्रिटल फेलियर के लिए आपने इसको फिर कंपेयर करना है मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट के साथ। मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट which is allowed in the beam, उसके लिए हम रिलेशन डेवलप करेंगे बाद में। अगर यहाँ तक आप समझ गए? यस सर। If this reinforcement is less than the maximum reinforcement, so then the beam will be under reinforced and it will fail in a ductile mode. Clear? और वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो हम बाद में करेंगे, सही? अगर यहाँ तक आप समझ गए कि किस तरह how to design the beam corresponding to stage 2. Yes, sir. समझ गए. Any question? कोई क्वेश्चन है इसमें? अच्छा, ये जो आप लोगों ने वैल्यूज कैलकुलेट किए, आप लोग कंफर्म नहीं करते ना, एक ही स्टूडेंट कैलकुलेशन करता है, बाकी आप लोग कंफर्म नहीं करते। ये वैल्यू मेरे ख्याल में ये वैल्यू ठीक नहीं है। अगर आप यहाँ पर 10 पुट करें तो इट विल बी इक्वल टू 2 multiplied by 1200 divided by Fy, which is 60, into D, which is 15.5 minus C by 3, which is 10 by 3.
ये जरा वैल्यू आप कैलकुलेट करें। थ्री पॉइंट टू एट 3.83 आप लोग जरा कंफर्म करें इसको ना। And from 3.28 if you calculate the value of C, so then it will be equal to how much? It will be equal to 12.14 inches. If you again put this value here, so it will be equal to 3.49. Okay. Then from this, if you recalculate the value of C, तो आप लोग इसको कंफर्म नहीं करते तो मुझे खुद भी करना पड़ेगा। Clear? And finally, if you again put this value here in this equation, so then the reinforcement value will be equal to 3.57 inch square. Okay. Recalculate the value of C. So this will be equal to 13.2 और दोबारा अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल बी 3.6 इंच स्क्वायर। तो अगर हम दोबारा एक और ट्रायल करें तो उससे भी हमारे पास रिइंफोर्समेंट आएगी 3.6 इंच स्क्वायर। So it means that the design reinforcement is 3.6 inch square. It is not 2.72. It will be 3.6 inch square. तो यहाँ पर आप जरा पुट करें and recalculate the number of bar. Corresponding to 3.6 inch square. How many bars are required? Quickly, Shabash. 4.56. 4.5. So instead of 4.5, we will take 5 number 8 bars. यहाँ तक क्लियर है? सर आपने कहा था C will be less than H/2 और C की वैल्यू सर 13 आ गई यहाँ पर। नहीं, वो तो फॉर ए गिवन बीम विद गिवन रिइंफोर्समेंट में बात कर रहा था। अब ये तो आपने रिइंफोर्समेंट अभी कैलकुलेट करनी है। यहाँ चूंकि डिमांड काफी ज्यादा है तो C की वैल्यू भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? इसमें यानी आप इस तरह कहे कि आप इस रिइंफोर्समेंट को जरा देखें कितना है। फाइनली जो हमने रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट किया कितना है? 3.6 इंच स्क्वायर। और जो हमने एक एग्जिस्टिंग गिवन रिइंफोर्समेंट के लिए जो हमने एनालिसिस की थी, अगर आपको याद हो, उसमें हमारे पास रिइंफोर्समेंट की वैल्यू थी 1.32 इंच स्क्वायर। याद है? यस सर। इन दैट बीम ओनली 3 नंबर 6 बार्स वर प्रोवाइडेड। तो मैं तो उसी बीम के लिए बात कर रहा था। इसके लिए तो आपने, क्योंकि रिइंफोर्समेंट की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो इसके लिए अगर आप C कैलकुलेट करें तो इट विल बी 13.2। बात समझ में आ रही है? उस केस में अगर आपको याद हो तो करस्पॉन्डिंग टू स्टेज 1 C वाज इक्वल टू H/2। इस तरह है कि नहीं? यस सर। तो मैं उसी एग्जांपल की बात कर रहा था कि अगर आपके पास C इज इक्वल टू H/2 है ए स्टेज 1, तो स्टेज 2 के लिए C विल बी लेस देन H/2। अब बात समझ आ रही है? अब इसी बीम के लिए जिसमें आपके पास 3.6 इंच स्क्वायर है, अगर आप इसके लिए C कैलकुलेट करें करस्पॉन्डिंग टू स्टेज 1 तो दैट विल बी ग्रेटर देन 13.2। अब बात समझ आ रही है?
यस सर। सर मतलब ये कि स्टेज 2 में जो न्यूट्रल एक्सेस है वो बॉटम की तरफ देखिए फॉर ए गिवन बीम with given reinforcement, if C value for stage 1 will be greater than the C value for stage 2. It is just simple. दो बीम्स को तो आप डिफरेंट बीम को तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, समझ में आ रही बात कि नहीं? Because this A is reinforcement will affect the value of C. इस तरह है कि नहीं? Yes, बिल्कुल sir. सिंपल है। आप लोगों ने ये जब आपने reinforcement प्रोवाइड नहीं किया था ना आपके पास है, ये आपके पास है फॉर एग्जांपल एरिया A1 और इसकी डिस्टेंस Y1, एरिया ऑफ द सेक्शन A2 और इसकी न्यूट्रल एक्सिस यानी सेंट्राइड इट इज Y2। तो आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं? Y इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। तो जितना आप A2 की वैल्यू जितनी बढ़ेगी सो Y डैश विल बी डिक्रीज। Y डैश अगर डिक्रीज हो तो ये C की वैल्यू, व्हाट अबाउट C वैल्यू, इट विल बी इंक्रीज। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर ठीक है। नहीं वैसे आपने कह दिया ठीक है कि आप समझ गए। This much reinforcement will shift the centroid of the section toward the bottom. इतना तो समझ रहे हैं ना? यस सर। सर मतलब ये reinforcement और लोड पे डिपेंड करता है, पर हर बीम के लिए डिफरेंट होगा ये। नहीं, ये रूल हर एक बीम के लिए सेम होगा। that C value corresponding to stage 1 will be greater than the C value corresponding to stage 2। ये तो हर एक के लिए सेम होगा, ये रूल तो जनरल रूल है, मगर दो डिफरेंट बीम्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये मैं बता रहा हूं। जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को की है तो उस केस में करस्पॉन्डिंग टू स्टेज 1 द C वैल्यू वाज h/2। याद है यार? आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। यस सर याद है। ये b स्क्वायर बाय 6 कहां से आया है? इट इज इक्वल टू I डिवाइड बाय C। I is bh³ by 12 and C is h/2। From this you get b square by 6। तो उस केस में C is h/2, so for stage 2 it will be definitely less than h/2। यानी अगर आप इस reinforced कंक्रीट सेक्शन के लिए जिसमें कि आपके पास reinforcement 3.6 इंच स्क्वायर है, अगर इसके लिए आप न्यूट्रल एक्सिस डिप कैलकुलेट करें करस्पॉन्डिंग टू स्टेज 1 तो दैट विल बी ग्रेटर देन 13.2 और लेस देन 13.2। ग्रेटर 13.2 से ज्यादा होगा डिफरेंटली, क्योंकि वहां पर तो क्रैक्स भी नहीं है, यहाँ पर तो फिर भी देयर विल बी क्रैक्स इन द बॉटम, तो द C वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड। अगर स्टेज 1 में भी नहीं है तो C वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। क्लियर? सर फॉर स्टेज 1 C वैल्यू इज इक्वल टू h/2 इस तरह है ना सर? नहीं, C इज इक्वल टू h/2 when you ignore the effect of steel। उस केस में चूंकि the steel reinforcement area was very small 1.32, उस केस में we ignore the effect of steel reinforcement। बात समझ में आ रही है? स्टेज 1 के लिए C इज इक्वल टू h/2 नहीं है, C इज इक्वल टू h/2 तब है स्टेज 1 के लिए if you ignore the effect of reinforcement। मगर आपके पास अगर 3.6 इंच स्क्वायर reinforcement है तो in that case you cannot ignore the effect of reinforcement। तो उसके लिए फिर C value will be greater than h/2। अब बात समझ में आ रही है? सर ये स्टेज 1 तो यही इसके लिए है कि when we ignore the effect of reinforcement, a beam without reinforcement। आप लोग इसमें क्यों कंफ्यूज है? अच्छा इसी के लिए अब हम कंपेयर करते हैं। चलिए आप
आप लोगों को ये बात मेरे ख्याल में समझ में नहीं आई। अच्छा, इसी के लिए हम कंपेयर करते। अब आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसी के मुताबिक मैं करता हूँ। सी की वैल्यू क्या है? 13.2 स्टेज 2 के लिए है कि नहीं? अब आप लोग कहते हैं कि स्टेज 1 के लिए सी विल बी इक्वल टू h/2। ओके, सही, सी विल बी इक्वल टू h/2। अच्छा, अब स्टेज 1 के लिए जरा मुझे बताएं h/2 की वैल्यू बताएं। शाबाश, स्टेज 1 के लिए h क्या है? ओके बताएं सर, जरा ना। क्लियर। स्टेज 1 के लिए h 40 है। अगर इसमें h/2 आप कैलकुलेट करें तो इट विल बिकम, इट इज 20 इंचेस। अब आप मुझे बताएं 20 इंचेस 13.2 से ज्यादा है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल। सही। अच्छा, तो नाउ you have calculated the reinforcement for the given demand corresponding to stage 2 and it is coming 5 number 8 bars. Ab the 5 number 8 bars, you can provide these bars in a single layer. अच्छा, ये पर स्केल तो नहीं है मगर आप इसको जरा देखें। अच्छा, अगर हम इसको सिंगल लेयर में प्रोवाइड करें 5 नंबर 8 बार, तो you have to satisfy one of the requirement of the code which says that clear spacing between two bars in the same layer or clear spacing between two layers will be at least equal to 1.5 inches. अब मुझे जरा ये spacing calculate करें. What will be the clear spacing between these bars? How to calculate the clear spacing between these bars? सबसे कवर और जो रिंग्स है सर उसके एरिया को माइनस। तो जरा बताएं ना। देखिए, total width of the beam is how much? This total width, it is 12 inches. Clear? समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब ऑक्युपाइड जो लेंथ है यानी विड्थ ऑक्युपाइड यानी जो यूज हुई है वो अगर आप देखें तो 1.5 इंच क्लियर कवर ऑन वन साइड, 1.5 इंच क्लियर कवर ऑन द अदर साइड, तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 3/8 inch dia strip on one side, 3/8 inch dia on the other side. So 3/8 plus 3/8 plus there are 5 number 8 bars and the dia of each bar is 1 inch. So 5 multiplied by 1 inch. This is the space which is occupied. तो ये जरा कैलकुलेट करें शाबाश। 8.75. It is coming 8.75. Now the available space, the total available space between the bars, it will be equal to, सर ये 1 की बजाय 0.7 नहीं होगा क्योंकि हमने तो नंबर 8 बार यूज किया है। नंबर 8 बार की डाया क्या है? नंबर 8 बार की डाया नहीं पता आप लोगों को? यदि तो हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बार डाया इज इक्वल टू नंबर बार नंबर डिवाइड बाय 8. तो 8 डिवाइड बाय 8 इज हाउ मच? अच्छा, अवेलेबल स्पेस इज इक्वल टू 12 माइनस 8.75. तो ये कितने
स्पेसिंग आ रही है? 3.2. Total available space, how much? 3.25. 3.25. Now number of spaces between the bars, 1, 2, 3, 4. There are 4 spaces because there are 5 bars. So clear spacing between 2 bars will be equal to 3.25. That is total available space divided by number of spaces between the bar, which is 4. तो कितना आ रहा है? 0.81. 0.81 inches, which is less than 1.5 inches. So we cannot provide all these bars in the same layer. अब बात समझ आ रही है? तो क्या करेंगे आप? You will provide 3 bars in the first layer and 2 bars in the second layer. अब बात समझ में आ रही है? So 3 plus 2, that is 5 number 8 bars. They will be provided in the beam. Clear? सर इसमें अब डी की किया हुई है। जी पूछे, क्या क्वेश्चन है? सर डी की वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आप मुझे जरा बताए, इट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। इट विल बी डिक्रीज डेफिनेटली। अच्छा, वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अब मुझे जरा बताए कि ये इफेक्टिव डेप्थ, बिकॉज इट इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर up to the centroid of reinforcement. तो centroid of these 2 layers वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, ये भी आप याद रखें, ये आप याद रखें जरा, this clear spacing between 2 layers, this shall be equal to 1.5 inches. ये भी आप जरा याद रखें. Minimum clear spacing between 2 layers, bars in the 2 different layers, and minimum clear spacing between bars in the same layer, it should be 1.5 inches. So this distance ये आपको पता है, this is 1.5 inches. Clear? अच्छा, आप जरा बताइए शाबाश, how to calculate the effective depth. अच्छा, ये जो effective depth आपके पास change होगा, so it will definitely affect the capacity of the beam. So that is why you will, this is the final step in the design, that you will basically calculate finally the actual D, effective depth, and based on the actual depth and the actual steel reinforcement area, you will calculate the actual capacity of the beam, and you will then compare that capacity with the given demand. बात समझ में आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तो ये डी किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो दिस इज वेरी सिंपल. आपने क्या करना है, you have to calculate this distance, which is layer 1, distance from extreme tensile fiber, tension fiber, up to the centroid of layer 1. See, it is denoted by, for example, y1, and distance of the bottom fiber, extreme bottom fiber, up to the centroid of the layer 2. It is, for example, denoted by y2.
क्लियर? अच्छा, y1 y2 कैलकुलेट कर सकते हैं। y1 किसके बराबर होगा? शाबाश, जल्दी बताएं। अभी हमने प्रीवियस h एग्जांपल minus d सर 5.37 1.5 plus dia plus dia longitudinal divided by 2. 2.5 हाँ बिल्कुल, इसमें क्या मसला है यार आप लोगों को। y1 इज इक्वल टू दिस क्लियर कवर विच इज 1.5 इंचेस प्लस डाई ऑफ स्टेरप प्लस हाफ डाई ऑफ दिस बार। तो 1.5 प्लस 3/8 प्लस हाफ डाया ऑफ द बार। तो डाया बार इज 1, सो 1 डिवाइड बाई 2। ये जरा कैलकुलेट करें। समझ में आ रही है ये बात? yes Yes, sir. 2.27 2.37 इंचेस। अब y2 जरा कैलकुलेट करें। y2 अगर आप यहां पर देखें, इट इज इक्वल टू y1 प्लस हाफ डाया ऑफ दिस बार एंड हाफ डाया ऑफ दिस बार। और दोनों बार की डाया चूंकि सेम है, तो आप इस तरह करेंगे कि डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार कर देता हूँ ताकि आपको पता है, हाफ डाया ऑफ लेयर 1 बार प्लस what is the clear spacing between the two layers? 1.5 1.5 y2 is equal to y1 plus half dia of longitudinal bar in layer 1 plus 1.5 and plus half dia of longitudinal bar in layer 2। तो ये दोनों तो सेम है। dia of longitudinal bar in bold layer it is number 8 bar, it will be equal to 1, so 1 plus 1.5 is 2.5, so y1 is equal to 2.37 प्लस ये दोनों अगर आप, चले लिख देता हूँ, 1/2 प्लस 1.5 प्लस 1/2। अब मुझे जरा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? 4.87 4.87 इंचेस। क्लियर? अच्छा, अब जरा मुझे बताए व्हाट इज द एरिया ऑफ reinforcement in layer 1? Area of reinforcement in layer 1? 0.79 multiplied by 3 तो करें ना, 3 multiplied by 0.79 कितना एरिया आता है? 2.37। okay, and what is the area of reinforcement in layer 2? 1.58 It is 2 multiplied by 0.79, so it is equal to 1.58 inch square। अब आप ये डिस्टेंस जो है, this distance from the bottom fiber to the centroid of reinforcement, या अगर आपको याद हो, we denoted this distance by DC। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग the Varignon theorem, and which is equal to, ये ऑलरेडी आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, A1 y1 plus A2 y2 डिवाइड बाई
A1 plus A2. अब ये वैल्यू जरा पुट करें शाबाश and quickly give me the value of DC. A1 आपके पास है 2.37 multiplied by Y1 which is also 2.37 plus A2 is 1.58 multiplied by 4.87 and divide by A1 plus A2, so this is 2.37 plus 1.58. What is the value of DC? $3.37. This is coming 3.37 inches. So now you can calculate the actual D, and actual D is equal to H minus DC. H is 18 minus DC is 3.37. तो ये वैल्यू जरा बताएं शाबाश। 3.37. 14.63. 14.6. 14.6. 3. 14.63 inches. Now you know the actual value of AS also and the provided reinforcement. अब आपने क्या किया, आपने after the drafting you will calculate the actual D based on the provided reinforcement and the actual AS, क्योंकि अगर आप देखें आपने जो reinforcement calculate किया है यहाँ पर it is 3.6 inch square, but you have provided 5 number 8 bar. Now 5 number 8 bar will give you reinforcement more than this, because 5 multiplied by 0.79 कितना एरिया आ रहा है? Quickly शाबाश। 3.95 जी 3.95. 3.95 inch square. So now this is the actual area which you have provided in the beam. The design reinforcement is 3.6 and actual provided area in the beam is 3.95. तो अगर आप देखें तो D effective depth तो आपके पास reduce उसकी वैल्यू तो कम हुई, मगर actual provided area is greater than the calculated area. So finally the capacity will almost be same, मगर फिर भी हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास actual provided area is 5 multiplied by 0.79 which is equal to 3.95 inch square. Now using this equation, this is equal to 0.5 ASFY into D minus C by 3. Acha, based on this actual reinforcement, now you can calculate the actual value of C. अब बात समझ आ रही है? In this equation now you will put the actual provided area, the actual calculated effective depth, and also you will calculate the actual value of C, and you know that the value of C is equal to AS FY divided by 0.45 FC prime into B. अच्छा ये जरा मुझे बताएं, यहाँ पर जो आपने ट्रायल एरर में C कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो, फाइनल वैल्यू वाज 13.2 ऑलमोस्ट। तो ये एक्चुअल C it will be greater than 13.2 or less than 13.2? ये बता सकता है? सर लेस होगी। नहीं, it will be greater than 13.2. Why? Because the area, the actual area is greater than the design area. एरिया तो आपके पास ज्यादा है ना,
तो यहाँ पर आप जरा पुट करें 3.95 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइड बाई 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 12। सी की वैल्यू जरा कैलकुलेट करें शाबाश क्विकली। Sixteen point two. It is coming 16.2 inches. Clear? Now you have all these parameters. All these parameters are known to you. तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पर पुट करें 0.5 multiplied by 15.6 आ रही है 3.95 multiplied by 60 multiplied by d which is 14.63 minus अच्छा ये कितना आ रहा है 14.6. 14.6 तो ये इसलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूँ ये कंफर्म कर दिया करें 14.62 इंचेस। क्लियर? तो यहाँ पर आप पुट करें 14.62 डिवाइड बाई 3। Now what will be the capacity? So this is the capacity based on the actually provided reinforcement. double 156.9 Double 1 56.9 56.9 inch skips. And what is the demand? Demand याद है आप लोगों को? 1200. Demand is 1200 inch skip. So the capacity is slightly less than the demand. And why this is less than the demand? It is mainly due to the reduction in the effective depth. अब समझ में आ रही बात? क्योंकि आपके पास effective depth की वैल्यू कम है, so that is why the capacity of the beam will also be reduced, because you can see the capacity is proportional to this d value. अच्छा अब हम क्या करेंगे? This is almost same, तो आप इसको इसी तरीके से छोड़ भी सकते हैं. You can say that the capacity is almost equal to demand. So, but जी जी सर जमन गेम क्लास शुरू है सर. अच्छा बस अभी कंक्लूड करते हैं ना, फाइनल अब सर करते हैं. ओके सर. ये बस लास्ट डिस्कशन है, फिर करस्पॉन्डिंग टू स्टेज 3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अगर यहाँ पर आप जरा देखिए अब इसकी सोल्यूशन क्या है. कैपेसिटी इज स्लाइटली लेस देन द डिमांड, तो क्या करेंगे आप? जी बताइए जरा. एरिया ऑफ स्टील इंक्रीज कर. हाँ इसका यानी फॉर द प्रैक्टिकल डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, because it is almost equal to the demand. You can say that this beam will safely carry the given demand. But from academic point of view आप क्या करेंगे? आप बस एक बार्स को बढ़ा ले यहाँ पर, instead of 5 bars provide 6 bars. यहाँ पर एक दूसरा बार भी in the second layer डालें. So this will basically increase the capacity of the beam and it will solve your problem. अच्छा अगर आप एक बार प्रोवाइड करें इसमें, तो फिर you can very easily calculate this DC, because now the area provided in both layers is same. So the centroid of these two layers you can calculate very easily. तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? Once again,
3 bars in the first layer, 3 bars in the second layer. So now for this you can calculate this DC very easily. DC will be equal to 1.5 inch, which is clear cover, plus dia of stirrup, which is 3 by 8 inch, plus dia of this bar, which is 1 inch, and plus half the distance, clear distance between these two bars, so which is 1.5 divided by 2. So DC जरा calculate करें शाबाश quickly. जल्दी करें शाबाश. DC क्यों बताए शाबाश. 3.6. It is coming 3.6 inches. So from this you can calculate D, effective depth, which is how much? D is equal to 18 minus 3.6. 18 minus 3.6, it is coming 14.4 inches. And what is the actual area provided? It will be equal to 6 multiplied by 0.79. ये कितना एरिया आ रहा है? जल्दी करें शाबाश. 4.74. 4.74 inch square. And what is the actual C? It will be equal to AS Fy divided by 0.45 FC prime B. So AS is 4.74 multiplied by 60 divided by 0.45 multiplied by 3 multiplied by 12. शाबाश. C की वैल्यू बताएं. जी. What is the value of C? जल्दी बताएं ना. 5. आपकी आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा जरा बताएं. कोई और इसको कंफर्म करे शाबाश. $17.5. 17.56 इंचेस. अच्छा, अब दोबारा जरा कैपेसिटी कैलकुलेट करें. MR is equal to 0.5 AS Fy into D minus C by 3. Now it is 0.5 multiplied by 4.74 multiplied by 60 multiplied by D is 14.4 minus 17.56 divided by 2. 3. Shabash, quickly calculate. $12.15. Now it is coming 1215.5. 1215.5 inch kit. Now the capacity is greater than the demand, which is 1200. So the design of the beam is the given beam will safely carry the given demand. Clear? So this is how you can design the beam corresponding to stage 2. बिल्कुल इसी तरीके से आप बीम को डिजाइन कर सकते हैं corresponding to stage 3. वो हम कमिंग क्लास में करेंगे. उसमें भी आप ट्रायल एंड एरर से कैलकुलेट कर सकते हैं reinforcement, and then you will provide the given reinforcement in the form of bars in the given section. Clear? Now if you have any question, you can ask the question, otherwise you can leave the class.
सर 2 जनरल क्वेश्चन है सर। जी पूछें। सर वो हम जब प्रोवाइड